हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये जो लाइन लेज़र है, इस लाइन लेज़र का हम लोग एक स्टैंड बनाएंगे जो हमारे लेवलिंग के लिए काम आएगा। जो भी हमारा एक मार्किंग स्ट्रेट लाइन के लिए जो भी मार्किंग करना रहेगा उसके लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल है ये स्ट्राइट लाइन का है। देखिए, इस टाइप का स्ट्राइट लाइन आता है। इसमें प्लस वाला मॉड्यूल भी हमारे को मिलेगा, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए हमारे को एक स्टैंड की ज़रूरत रहेगी, तो उसके लिए चलिए अभी हम लोग एक इसके लिए स्टैंड रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up, oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck, I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me, I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning, I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me, I need focus to keep me from hopeless, psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
देखिए फ्रेंड्स, इसका भी हम हाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे ये प्रोजेक्ट, ये लेज़र लाइन जो है काम करता है। ये आके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो बड़ा वाला जो हम लोग लाइन लेज़र लेते हैं कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का आता है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये आपको आराम से एक 200-250 रुपये में आराम से बन जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है, कोई इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल कुछ नहीं है। जस्ट एक बॉक्स लेना है, बैटरी और एक चार्जिंग मॉड्यूल, स्विच। इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। इसमें आपको चाहिए तो प्लस मार्क का भी आता है, 4 वे लेज़र का, वो भी आप चेक, उसका भी लिंक डाल दूंगा। वो भी चाहिए तो आप आराम से इसको घर में बना सकते हैं। अगर ये मेरा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया, ये DIY प्रोजेक्ट, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।